everyone. Good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Nikun sir, can you please try unmuting and speaking one? Yeah. Am I audible now? Sir, you are clearly audible. Okay. Anyone, you are audible. So give me 2 minutes. I'll set up and then we can. Sure. So good afternoon, everyone. Well, not visible, Amitji. I hope I am visible and Nikun sir will be visible in few minutes. Wazirji, if you have any issues, please drop a mail to query@motilaloswal.com. Our team would be happy to take it up. Good afternoon, Sumit ji. Good afternoon. कल हमने technical glitch की वजह से कोई trade initiate नहीं किया था, but we have already sorted that up, and I guess we are good to go. We will start the session in next 2 minutes. Nikun sir is already here. We had a great morning session with Piyush sir. We will shortly update on the trades that were initiated in the morning session as well. Please update on Oswal seats about 500. I can see some stock queries are also coming in. We will take these up. Let's just wait for our expert to join in. Okay, so he has shared the screen, so I guess we can officially start. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. I manage all the community-related engagement sessions, engagement activities, and here we are in the live trading session. For the people who are joining in for the first time, हमारे generally 2 sessions होते हैं. One is morning, which is fixed at 9:30 a.m. Second is at 2:30 p.m. The morning session focuses around equity, so हम काफी ज़्यादा focus करते हैं stocks पे भी. We take a lot of queries. हम generally intraday trades initiate करते हैं in the morning session. Afternoon में we focus on derivatives, so जिस दिन जो expiry है हमारा focus उस पे होता है, and as per the expiry we get an expert to trade with us. We have Nikun sir here with us, Nikun Patwa sir. Sir, it will be great if you can turn on your camera. And yes, Janak ji, बहुत सारा move आया है, so we hope we can capture some in this session and book some profit. I hope I am clearly audible. Nikun sir is clearly audible and visible. I can see you, sir. Okay. And we are good to go. You can start the session, sir. Okay. So good afternoon, everyone. Welcome to the weekly expiry of Nifty Financial Services, that is FINNifty. तो एक्शन स्टार्ट करते हैं. पहले हमारे एज यूजुअल निफ्टी के जो मेन इंडेक्स है उसे स्टार्ट करते हैं. तो निफ्टी ने 2 दिन में अच्छी रिकवरी देखी गई है. फ्राइडे के क्लोज से ऑलमोस्ट वी आर गुड 300-400 पॉइंट्स हायर देन व्हाट वी क्लोज ऑन फ्राइडे. तो नीचे में 24,800 को रिस्पेक्ट किया है और 2 दिन में ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई है. बट जब तक 24,700-750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 25,200, 25,300 ये ऊपर के हर्डल्स एक फेस कर सकता है. तो एक ब्रॉडर रेंज कुड बी 24,750 टू 25,200-300. तो ये रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है निफ्टी. बट 24,550 के नीचे क्लोज आता है तो थोड़ा सा वरीसम हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ इट इज पॉजिटिव. 24,750 के ऊपर है तक 25,200 के लेवल्स ऑन दी हाई साइड कैन बी एक्सपेक्टेड इन निफ्टी. और 25,000 के ऊपर आज कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है. तो आज अच्छा नीचे से रिकवरी देखी गई, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर निफ्टी. बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली इट यस्टरडे फॉर अ चेंज इट वाज शोइंग सम स्ट्रेंथ. नीचे से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पियर्सिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनी है कल बैंक निफ्टी में ऑन द डेली स्केल. और आज थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग आया है, बट नथिंग मेजर एज सच. बट 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज गिविंग सम कंफर्ट टू द बुल्स. तो जब तक 50,800 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है फॉर बैंक निफ्टी, तो जब तक उसके ऊपर है तब तक वी आर फाइन. आई थिंक ऊपर में स्लो एंड स्टेडी 51,500, 51,800 आ सकता है बैंक निफ्टी में. The main reason for this recovery is mainly due to strong move in ICICI Bank and to some extent HDFC holding strong and not falling. So HDFC 1620 जो उसका 50 DM में है, it is holding that from almost 2-3 weeks now. So that is what we have to be careful with on the lower side in HDFC Bank. FINNifty जिसकी आज एक्सपायरी है उसके बारे में बात करें.
सो आज ऊपर ओपन होके थोड़ा सा ऑलमोस्ट ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सिमिलर. तो अगर ऊपर से देखें हम आर्ली चार्ट पे तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था और 4 कैंडल्स की थोड़ी रिकवरी देखी गई थी. तो नीचे से 23,580 के आसपास से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की एक रिकवरी देखी, बट ऊपर से वापस आज अभी लास्ट 5-10 मिनट्स में थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है. तो we'll see as of now from the morning we have played on the call side wherein we have tried to buy on dips. ये buy on dip stance हमारा सुबह से रहा है wherein we tried to capture with small momentum, but we 23,650 was a very crucial support for FINNifty, which was the higher high का negation था. So it has broken that as of now. So we'll see how to go about in the trade for the expiry per se. So the expiry range that we were working with was 23,650 to 23,690 to 720. But as of now, it has broken 23,650 and थोड़ा सा और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है. तो 15 मिनट के चार्ट पे देखे तो थोड़ा सा एक रेंज का ब्रेकडाउन तो है, बट ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, if you can see on the chart, it is holding as of now. So we'll try to see how it plays 623, 640 and 630. These are the two immediate, मतलब last 20 minutes के लिए एक support zone है. तो we'll see how to go about with it in the trade. तो हमारा जो strike हमारे radar पर है, that is 23,600 का call option FINNifty का. So as of now, it is quoting at 52.53. So we'll see how it respects 23,640 के levels को. As of now, 640 hold करके 650 आया है spot level में. So we'll see how it goes, and accordingly, we'll definitely try to capture some sort of momentum or some sort of trade in that. So सुबह से हमने all side ही दिया है, तो I don't think we need to shift as of now to the put side. But for the time being, 23,640 hold कर रहा है. तो 640 and 630, these are two immediate support. अगर ये break कर देता है तो I think there would be no trade on the call side, because इतना major move के trend line के almost 5-6 touch points है. तो it has been respecting it from many candles. So if it breaks that, then I think no trade will work. So as of now, we'll see 23,630, 640, how it holds for next 5-7 minutes. We'll observe that, and accordingly we'll share the levels and के कौन से price पे buy करना है. FINNifty का 23,600 का call option. So I think in the meantime, I think we can take some queries. अगर कुछ रहेगा है, definitely come back on the trade and update on the same. Sir, do we have any BTST as of now, or we should wait for the end of this session? I think एक stock था. I'll just check. Elkem. I'll just check the chart. Elkem is doing very good. So I think Elkem is a good BTST candidate as of now. अगर आप करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है. एक 5 days का, 4 days का अप मूव एंड देन 2 days का कंसोलिडेशन, एंड द स्टॉक इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अबाउट द सेम. सो अगर BTST कोई करना चाहता है तो Elkem Lab and Pharma has been doing good and has been outperforming almost all the other indices. Be it Sun Pharma, Lupin, they are on a bull run of their own. So Elkem being a pharma space and has been trading strong. तो अभी 6350 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो आई थिंक BTST के लिए गुड सेटअप बन रहा है इन Elkem Labs. तो one can keep a stop of 6300 or 6280 and look for 6410 and 6440 on the higher side or in Elkem. So BTST एक Elkem समझ में आ रहा है, तो we can give Elkem as a BTST 6280 and 6300 का stop loss से you can look for 6410 and 6440 on the higher side in Elkem Labs. So guys, we have Elkem as a BTST. The buy is at 6350, stop loss 6280, and the target is 6440.
Yes. If there's any other, I'll definitely intervene and share the stock ideas or the trade setup that we are working with as of now. Sure, I'll just scroll up and meanwhile, we'll take up some stock queries. So, Geo Finance for long term. Geo Finance, after long consolidation, it has given a good breakout. तो आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो. तो अगर लॉन्ग टर्म है 2-3 साल का आपका टाइम हराइजन है तो कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 280 और 270 यू कैन लुक फॉर 450 and 500 on the high side in Geo Finance. So it's a must have in your portfolio. So, Tata Power. I hope my screen is visible, right? Yes, sir, your screen is visible. Okay, perfect. तो टाटा पावर ने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 5% हायर है. तो आफ्टर so many days it has given a range breakout after almost 2-3 weeks it has been consolidating. तो अच्छा ब्रेकआउट है. 440 के ऊपर क्लोजिंग आज आ रहा है 437 के ऊपर. तो ऊपर में वापस 455 453 के आसपास आ सकता है स्लो एंड स्टेडी. थोड़ा सा आज अच्छा मूव है लेकिन यूजुअली इट्स अ लो बीटा काउंटर, थोड़ा 1-2% ही मूव करता है. बट आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो वी शुड कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टाटा पावर विद द सपोर्ट ऑफ 435 और 436. अगर आपका ट्रेडिंग पोजीशन है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म मतलब 2-3 वीक्स का ट्रेड है तो 430 और 428 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. ऊपर में 460 के टारगेट के लिए. I have purchased Shipyard 100 shares at the rate of 2850. 2850. तो आपके प्राइस ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स लोअर है. आई थिंक द शिप डिफेंस स्पेस हैज बीन लैगलेस. थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है. ऊपर से काफी गिरी. इवन कोचिन, मजगांव, जीआरएससी सारे ऊपर से ऑलमोस्ट 20-30% करेक्ट हो गए स्टॉक. एंड देयर इज नो व्हाट से कहाँ पे भी रुकने का अब तक कोई संकेत नहीं दिख रहा है. बट एज ऑफ नाउ इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं देखूं तो 1800 और 1770 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है. बट आपका लेवल आने के लिए थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा. आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स लोअर फ्रॉम योर बाई प्राइस. तो आई थिंक अगर आपका ट्रेडिंग पोजीशन है तो यू शुड हैव ऑर्डर्ड सम स्टॉप लॉसेस बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग अ स्टॉक 1000 पॉइंट्स लोअर. बट अगर आप नीचे में थोड़ा सा ये करना चाहते हैं तो 1700 and 1720 is a decent level wherein you can look to buy again. But let the fall get arrested, then let it consolidate, then it can again start its upward journey. So as of now, no, फिलहाल रुक नहीं रहे. थोड़ा सा corrective मूव आ रहा है. Sir, update on the FINNifty. Do we have any chance of As of now, the call is quoting. जब मैंने बताया था तो 23,600 का कॉल था. 51-52 53 है. तो डेफिनेटली अब यार थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है. लास्ट जो एक्सपायरी थी उसमें कुछ ज्यादा ही मोमेंटम था when we had to change 3-4 strikes and today it has been absolutely opposite कि हम जो strike सुबह से देख रहे हैं we have given call in this strike only from morning. So the momentum is missing clearly and there is no rush in buying and giving some trade wherein the setup is not in our favor. As I said, I showed the chart also. हमने chart share किया था. Again try to explain what I was trying to point out. जैसे आर्ली कैंडल पे भी हम देखे आर्ली चार्ट पे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद फोर्थ कैंडल का अप मूव आया था एंड वो आर्ली को हायर हाइस को नेगेट कर दिया है. तो अभी क्या है ऊपर में थ्रस्ट थोड़ा सा मिसिंग है. सो विच इज व्हाई आई वेटेड फॉर 650 का लेवल. तो 650 तो व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन इट ब्रोक दैट 23,650 का बैरियर. बट नीचे में 630 640 फिलहाल होल्ड कर रहा है. तो एज ऑफ नाउ अगर और 5 मिनट्स तक वो होल्ड करता है तो विल ट्राई टू वर्क सम ट्रेड आउट फॉर लो रिस्क सेटअप. जैसे 5-7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस से विल ट्राई टू गिव सम ट्रेड. अगर इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी of making money, there's no point giving M52 and then hoping that it works and then wait for 12 rupee ka stop loss and eventually gets hit because of time decay or whatsoever reason. So we'll first wait and watch 635 640 kya karta hai. We'll surely update on the same. I have the strike as well as the index is on my other screen, so I'll definitely intervene and update it jo aata hai us hisab se. Sir, your view on SGVN?
SJVN, again, all the PSU stocks has seen almost 20-25% तो ऊपर से करेक्ट हो ही गए. BHC, SJVN, NHPC और इवन हुडको और IRED सारे ऊपर से कूल ऑफ हो गए. बट SJVN में आज अच्छा नीचे से रिकवरी देखिएगा, कैंडलस्टिक भी अच्छा बना है. तो अगर ऊपर में 135 और ऊपर 140 अगर निकल जाता है तो उसके ऊपर एक अपन बोल सकते हैं कि फॉर द टाइमिंग एक इमीडिएट बॉटम बन गया है इन SJVN. तो अगर 140 के ऊपर क्लोज आता है तो डेफिनेटली इट कैन रीटेस्ट टू 150 155 आल्सो. बट नीचे में 125 इज वेरी क्रूशियल. अगर 125 ब्रेक करता है 125 तो वापस और 5-7% का ब्रेक आ सकता है इन SJVN. सो अगर आपका पोजीशन है तो 125 शुड बी अ स्टॉप. सर IRFC, सेम IRFC, RVNL, इवन इरकॉन ऊपर से काफी करेक्ट हो गए. बट थोड़ा सा द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल हैज रिड्यूस्ड. एंड आज कल हैमर कैंडलस्टिक के बाद थोड़ा सा फॉलो बाइंग आया है, बट इट इज नॉट दैट ग्रेट. तो नीचे में 160 अगर ब्रेक करता है तो आई थिंक और करेक्टिव मूव आ सकता है. जब तक 160 होल्ड कर रहा है ऊपर में वापस बाउंस बैक टुवर्ड्स 180 to 185 आ सकता है इन IRFC. बट 160 इज वेरी क्रूशियल. अगर आपका पोजीशन है रॉन्ग तो 160 शुड बी अ स्टॉप. अगर आप फ्रेश ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो 160 शुड बी अ स्टॉप. एंड यू कैन लुक एट 175 एंड 180 ऑन द हाई साइड. सर डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है ऊपर से. फार्मा स्पेस हैज बीन आउट परफॉर्मिंग, बट ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है. 7 डेज का एक करेक्टिव मूव है. तो अगर ऊपर में वापस 6720 के ऊपर निकल जाता है तो वापस एक नेगेशन ट्रेड होता है ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट्स के लिए. अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन लुक फॉर डिसेंट सेटअप इन डॉक्टर रेड्डी. अगर 6720 के ऊपर निकल जाता है तो वापस 6820 एंड 6850 आ सकता है. एंड नीचे में सपोर्ट है 6600 एंड 6580 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक आई थिंक द पॉजिटिव बाय शुड बी कंटिन्यूड इन डॉक्टर रेड्डी. सर GMR इंफ्रा, GMR, आई थिंक आई मेड अ गुड ट्रेंड लाइन ऑन इट. तो एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और कल सेम ट्रेंड लाइन से एक बाउंस बैक आया. तो जब तक ये कल का लो जो है 89.20 तो 89 विल राउंड इट ऑफ. 89 जब तक होल्ड कर रहा है ऊपर में वापस 96 की जगह है, बट एक कंसोलिडेशन में ही है. नीचे में 88 के आसपास आता है, फिर बाइंग आती है, 95-96 जाता है, वहां से वापस प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है. तो एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड इसमें बन रहा है. तो जब 88-89 के आसपास आता है तो 1-2% के स्टॉक के साथ लुक फॉर 4-5 पॉइंट्स का मूव इन GMR इंफ्रा. So coming back to, I'll again update on our FINNifty call जो हम ट्रैक कर रहे हैं 23,600, currently quoting at 54.55 and the spot is 23,657. So 23,640 तो फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है. तो we'll try to work something out in that, but as of now the momentum is not convincing because the auction again back to 52-53. So as of now I am not too confident, or what do you say, the price action is not supporting the index as of now. So I think we'll wait it out. अगर कुछ होगा तो definitely we'll update in the last 5 minutes. अगर कुछ नहीं होगा तो then we'll skip it. As of now we'll wait for a better what do you say, the setup to play out, because जब हमने session start किया था the call option 27,600 was quoting at 52. Right now it is at 53. So the momentum is absolutely missing. जितना लास्ट FINNifty पे था एक्सपायरी पे मोमेंटम उसका एब्सोल्युटली ऑपोजिट है आज. So a lack of momentum, but still we'll try, we'll figure it out something. If we get something to play 5-7 rupees, so we'll definitely
update on the same. Sir, MRPL. I think MRPL has corrected a lot. आज थोड़ा सा नीचे से bounce back तो आया है. तो 184 and 185 is very crucial for MRPL. But strong momentum is missing. थोड़ा सा bias थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है. But ऊपर में जब तक 220 के ऊपर नहीं क्लोज आती तब तक ये लोअर टॉप लो बॉटम जो कंटिन्यू करेगा MRPL. बट नीचे में 180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. तो वो जब तक 180 होल्ड करता है एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 205 की तरफ आ सकता है. बट मोमेंटम इज क्लियरली मिसिंग इन MRPL. अगर आपका पोजीशन नहीं है तो डोंट गेट इनटू इट. ट्राई टू बी विद द स्टॉक्स दैट आर relatively outperforming the index rather than underperforming. MRPL is not participating in the Nifty up move. Nifty all time high के आसपास है. So almost 100-200 पॉइंट दूर है अपने all time high से. But this stock is almost near its 52-week low. So I think be with the leaders and the stocks that are outperforming rather than the underperformers. Sir, Prestige क्या हम खरीद सकते हैं इस लेवल्स पर? Prestige State. I think yes. अगर आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है तो I think stock is looking decent. नीचे में 1765 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 1882 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट. अगर 1882 निकल जाता है तो द स्टॉक कैन इवन टेस्ट 2100 ऑन द हाईएस्ट. एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है 1880 के ऊपर. तो अगर 1880 निकल जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ट्रेड सेटअप इन प्रेस्टीज. अगर आप 2 ट्रांच में ले सकते हैं तो यू कैन बाय स्मॉल क्वांटिटी नाउ एंड कीपिंग अ स्टॉक ऑफ 1760. एंड अगर 1880 के ऊपर ब्रेकआउट आया था देन यू कैन अगेन do pyramiding in the stock and look for 2100 on the high side Prestige. Sir, your view on Tita got bought at 1834. 1834. Okay, so again almost near the all-time high है. उसका all-time high ही वो 1896 है. Almost 400 points lower from the all-time high. तो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है विच इज अ गुड पार्ट. हैज स्टॉप्ड करेक्टिंग. सो आफ्टर अ फॉल इट हैज कंसोलिडेटेड. तो अभी अगर ऊपर में 1520 निकल जाता है तो एक 1650 1700 के आसपास आ सकता है टिटागो वैगन प्रोवाइडेड इट क्लोजेस अबव 1520. तो वो एक फॉल को अरेस्ट करके कंसोलिडेशन करके वापस अपना नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव कैन स्टार्ट. बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी टाइट रेंज. नीचे में 1360 एंड ऊपर में 1520 और 1500. तो एक रेंज में 100 पॉइंट के रेंज में है. 1520 के ऊपर एक क्लियर ट्रेड सेटअप बनेगा. GNA एक्सेल GNA एक्सेल का सेटअप अच्छा है. अगर कंसोलिडेशन तो है. अगर 455 एंड 460 के ऊपर निकल जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है. बेस फॉर्मेशन हुआ है और बॉक्स फॉर्मेशन का एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा. तो 455 एंड 460 के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है इन GNA एक्सेल. वी कैन टेक इट टू 480 और 490 आल्सो ऑन द हायर साइड. नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 432 एंड 428 का. तो 440 के ऊपर 455 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है GNA एक्सेल. तो कीप दैट लेवल इन माइंड. Sir, coming back to FINNifty. Again, I think अभी फिलहाल कोट कर रहे हैं 48. नीचे में 43 हुआ था. तो we'll try to see how it works. The index is 23,648 or 46 and the option is currently quoting at 48.49. So I think the momentum 100% is missing. So I'll try to squeeze something अगर opportunity मिलता है. तो अगर एकदम ही desperation में आके I don't think we need to take trades because capital protection is the most important part in equity market. आज बचेंगे तो कल next trade ले पाएंगे. So I think that is what I strongly believe in. And again
52 था, अभी 48 है, नीचे 43 44 होके वापस 46 47. So there is no point aggressively buying a call option as of now, because 623 650 break किया है, तो which is not giving me that good comfort in the trade. So I think we have shared one BTST. If we get any other opportunity in BTST kind of a trade wherein you can take some position in the equity stock, then you can make money. At least 1-2% का एक move आ सकता है. So I think Sir, we trade sorry, in the I'll just complete this. sorry. I think एक stock Engineers India after a long time. So engineers एक negation trade बन रहा है. So it can, we have initiated a CDI idea in Engineers India. So weekly daily पे एक strong support zone से वापस buying interest आया है in the stock, and it is holding its crucial support zones. And weekly scale की अगर बात करें तो वापस अपने previous demand zone के आसपास आया है, और hammer kind of a pattern बन रहा है on the weekly scale, which is a bullish reversal candlestick. So I think it's a good trade setup. एक CDI idea हमने initiate किया है, wherein we can buy at CMP, which is 212 and 213. Keeping a stop of 203, we can look for 230 235 on the higher side. So एक CDI idea we are sharing. We have shared one BTST in Alchem Labs, and this is conviction delivery idea, जिसका हमारा time horizon रहता है usually 5 to 7 days minimum. So buying at CMP, which is 212 213, keeping a stop of 203, and look for 231 and 235 on the higher side. Sir, Lakshmi Organics was given as our intraday in the morning. The stop loss has not triggered yet, but it will be great if you can share the view on it. The stop loss was 314, the target was 330, and the buying was 318. Okay, 300. So it is just 1 point lower than the buy price. एक strong momentum तो दिया था. The stop loss is not very, but अगर intraday के लिए है तो you should definitely book your 1 rupee जो आपका अगर loss आ रहा है exit कर लेना चाहिए. अगर intraday है, एक थोड़ा सा ऊपर से profit taking तो आया है, तो I think look for a better entry point near 304 305. So I would suggest to exit the position. If it's an intraday, you have strictly done an intraday, then you should definitely book your book out from this trade. So it was at 317 and abhi bhi 317 ही है, so I don't think you'll be losing much on it. And sir, we had another trade in the morning, that was Lemon Tree. Again, stop loss hit नहीं हुआ है. The buying was 132, the stop loss was 129, and the target was 136. Okay. So Lemon Tree एक थोड़ा सा bottom formation तो हो रहा है, तो नीचे में अगर 125 नहीं break करता है तो तब तक you can hold, but I think अगर intraday के लिए है तो definitely I think you should exit the position. I think ऊपर से वापस थोड़ा सा correcting हुआ है, and the stock जो broader market है, the stocks are not what do you say giving that good momentum. तो इंडेक्स में रैली हो रहा है, तो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स ही चल रहे हैं. जैसे आज आईटी ने, मिड कैप आईटी हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, इवन बी इट LTIM, इवन बिरला सॉफ्ट, एंड दोस स्टॉक्स आर डूइंग गुड, बी इट इन्फोसिस, TCS जो हेवी रेट्स है. सो आई थिंक द ब्रॉडर मार्केट इज नॉट participating in this up move. So I think you should get your trade out from the Lemon Tree. And एक BTST एक समझ में आ रहा है, तो L&T हाउसिंग फाइनेंस जो L&T फाइनेंस लिमिटेड है 171 कोट कर रहा है, 171 हाफ. तो ये BTST के लिए क्लासिकल सेटअप बन रहा है. When you can buy CMP in a stop of 167 and look for 180 on the higher side. तो Alchem के साथ एक और BTST है, L&T FH, Last and Two Finance Limited. The stock has given a good breakout, almost near its breakout zone. So 166, 167 के stop loss से look for 180 on the higher side. And coming back to our FINNifty trade, जो 23,600 का call option था, quoting at 46.45.
So only excuse me, 5 points का move आया है ever since we started the trade. Ever since we started our session, so 53 था almost 38 हो गया है. तो it never gave me comfort to buy. So I think we did a good thing that we didn't enter in any trade because 650 was very crucial. That did bullish setup के लिए 650 we didn't have to break. So it broke and it is not worthwhile taking any position in call option. So I think we'll give it a skip for the day. So I guess, guys, we have no trade for the day, but we have two BTSTs that we have already shared. You can check the pinned section. We have Alchem and L&T Finance. The levels are in front of you. And yesterday we couldn't initiate any trade because of the technical glitch. But today the market did not give an opportunity to us to do something and try something क्योंकि momentum नहीं था ज़्यादा and it was in a range and ज़्यादा moment नहीं देखा हमने. I guess saving a capital जैसा सर ने कहा is very important. We hope कि tomorrow we get some good trades, and that will be all. Thanks a lot, Nikon sir. Thanks a lot, everyone, for joining in. See you tomorrow again in the morning session at 9:30 a.m. with our expert. Just give me a second. Nikon sir. Nikon sir will be joining us tomorrow at 9:30 a.m. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Nikon sir. Have a good